সুৰদাস, আজি মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, গতিকে তুমি আজি মোৰ পৰা ইচ্ছা অনুসাৰে যি তোমাক ইচ্ছা লাগে সেয়া খোজা, মই তোমাক দিম। তেতিয়া সুৰদাসে ক'লে, মোক একোৱেই নালাগে প্ৰভু, সদায় যাতে আপোনাৰ যি অনন্য লীলাসমূহ, আপোনাৰ যি গুণ গাথা, সেয়া মোৰ কৰ্ণপুটেৰে মই যাতে শুনিবলৈ পাওঁ সদায়, লগতে আপোনাৰ অন্তঃকৰণত স্থাপিত কৰি আপোনাৰ অনন্য লীলাৰ বৰ্ণন লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰিলে মোৰ জীৱনত বাকী একোৱেই নালাগে। তো ভগৱন্তই ক'লে, চোৱা তুমি অন্ধ হোৱাৰ উপৰিও তুমি ইমান মোৰ কাৰণে অনন্য লেখনি এনেকুৱা তৈয়াৰ কৰি পেলালা, তোমাৰ অন্তঃকৰণত ভক্তি ভাৱ আছে, তুমি এতিয়া মোৰ পৰা একো খুজিবই নালাগে, তথাপি মই তোমাক কিবা দিব বিচাৰিছিলোঁ। কিয়? এই সংসাৰ যি আছে, সুৰদাসে কৰা ভক্তিৰ প্ৰভাৱত ভগৱন্তই ওচৰলৈও নাহিলে, ওচৰলৈ অহাৰ দূৰৰ কথাই ভগৱন্তই একোৱেই সেই অন্ধক নিদিলে। সেয়া কলংকিত হোৱাৰ ভয়েৰে মই তোমাক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, তুমি কিবা লোৱা। কিন্তু সুৰদাসে মানা কৰি দিলে, প্ৰভু মোক একোৱেই নালাগে মোক একো। ভগৱন্তই মনে মনে ভাবিলে, সুৰদাস জন্মান্ধ, অন্ধক কি লাগে? চকু লাগে। তো ভগৱন্তৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলে আৰু সুৰদাসক চকু প্ৰদান কৰিলে। চকুৰ প্ৰদান যেতিয়া কৰিলে, সুৰদাসক ক'লে, তুমি চকু খোলা। তেতিয়া যেনেকৈ চকু মেলি চালে, জগত পিতা ভগৱন্ত নাৰায়ণক ওচৰত পালে সুৰদাসে। চৰণৰ পৰা মুখমণ্ডললৈ 7 বাৰ, ওপৰৰ পৰা মুখমণ্ডলৰ পৰা চৰণলৈ 7 বাৰ দৰ্শন কৰিলে সুন্দৰকৈ। তাৰপিছত ভগৱন্তক সেৱা জনালে। ভগৱন্তই উঠাই লৈ সুৰদাসক ক'লে, এতিয়া তুমি চকুৰে দেখিব পৰা হ'লা, তুমি সুখীনে? তেতিয়া সুৰদাসে ক'লে, হয় প্ৰভু মই সুখী, কিন্তু এটা কথা, আপুনি অলপ আগত কৈ আছিলে যে মোক কিবা এটা আপুনি দিব, তো মই আপোনাৰ পৰা কিবা বিচাৰোঁ, দিবনে? ভগৱন্তই ভাবিলে চকু নাছিলে তেতিয়ালৈকে, চকু নথকালৈকে লোভ ভাৱ নাছিলে, চকু দিলোঁ, এতিয়া কিবা এটা লগা হ'ল। ভগৱন্তই ক'লে, ঠিক আছে তুমি কোৱা কি লাগে তোমাক? সুৰদাসে কি ক'লে, প্ৰভু আপুনি বাৰে বাৰে কৈ আছিলে মোক কিবা এটা দিম, কিন্তু মই আপোনাৰ পৰা একো নিবিচাৰিলোঁ। এতিয়া আপুনি নিজৰ মনেৰে, নিজৰ ইচ্ছাৰে মোক চকু প্ৰদান কৰি দিলে, তাৰ উপৰিও মই আপোনাৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰোঁ। যদি আপুনি বচন দিয়ে মোক দিম বুলি, তেতিয়াহে মই আপোনাৰ পৰা খুজিম। তো ভগৱন্তই বচন দিলে, মই তুমি যি খোজা মই তাকে প্ৰদান কৰিম। সুৰদাসে হাত জোৰ কৰিলে আৰু ক'লে, প্ৰভু আপুনি যেনেকৈ মোক চকু প্ৰদান কৰিলে, আপুনি যদি মোক কিবা দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক পুনৰাই অন্ধ কৰি দিয়ক। মই আগত যেনেকুৱা আছিলোঁ মোক তেনেকুৱাই বনাই দিয়ক, পুনৰাই মোক অন্ধ কৰি দিয়ক। ভগৱন্তই সুধিলে, কি হ'ল তোমাৰ এতিয়া? সুৰদাসে ক'লে, আজিলৈকে মই অন্ধ হৈও আপোনাক নিৰন্তৰে ভজি আছোঁ, নিৰন্তৰে আপোনাৰ উপাসনা কৰি আছোঁ। যদি মই এতিয়া চকুৰে দেখিবলৈ ধৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ আৰাধনা হয়তো মই পাহৰিবও পাৰোঁ। আৰু লগতে এটা কথা কওঁ, আপোনাৰ দৰ্শন ডাঙৰ ডাঙৰ কমলাত্মা, বিমলাত্মা, নিৰ্মলাত্মা, শুদ্ধাত্মাই সমাধিস্থ হৈ আপোনাক বিচাৰিও যদি নাপায়, তেতিয়াহ'লে মই সামান্য সুৰদাস
মই আপোনাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ পালোঁ যেতিয়া, এতিয়া মোক অৱশেষ দৰ্শন কৰিবলৈ একোৱেই নাথাকিল। গতিকে আপোনাৰ দৰ্শন মোক হৈ গ'ল যেতিয়া, আপুনি মোক পুনৰাই অন্ধ কৰি দিয়ক। এয়া হৈছে ভক্তিৰ লক্ষণ, ভগৱন্তৰ ভক্তৰ লক্ষণ। তো সুৰদাসৰ মনত যি ধৰণৰ ভাৱ আহিছিলে, বোলে যদি মই এবাৰ ভগৱন্তক দৰ্শন কৰি ল'লোঁ, এতিয়া যদি মই অন্ধও হৈ যাওঁ, ভগৱন্তৰ সেই দৃশ্য, ভগৱন্তৰ সেই মুখমণ্ডল, সেই চৰণ কমল, সেই স্বৰূপ মোৰ অন্তকৰণত চিৰদিনৰ কাৰণে স্থাপিত হৈ ৰ'ব, চিৰদিনৰ কাৰণে থাকিব। সেই ভাৱনাৰে সুৰদাসে ক'লে মোক পুনৰাই অন্ধ কৰি দিয়ক। তো আত্মদেৱ এই ভক্তি যি আছিলে, মই যি সূত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ আপোনালোকক, এয়া আত্মদেৱৰ ভক্তি। আত্মদেৱে তেনেদৰে ভক্তি কৰিছিলে। কিন্তু ভগৱন্তই সকলো কথা পূৰ্ণতা ৰূপে কাকো দিয়া নাই, এয়া ভালকৈ জানিব লগা কথা। কিন্তু আমি সেইটো বুজি নাপাওঁ। যদি আমি সৰ্বগুণ সম্পন্ন হৈ যাওঁ, তো ভগৱন্ত আৰু আমাৰ মাজত পাৰ্থক্য নোহোৱা হৈ যাব। আৰু আমাৰ পূৰ্বাৰ্ধ যেনেকুৱা আছে, আমি তেনেকৈয়ে নিজৰ জীৱন যাপন কৰি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন যেনেকৈ আমি পাৰ কৰি আহি আছোঁ, এয়া নাভাবিব যে মই যোৱাকালি মহাভাগৱতৰ কথা শুনিছিলোঁ ছ'চাইটিত গৈ, তাৰ ফলস্বৰূপে মই আজি কিবা এটা পালোঁ বা সুফল পালোঁ, সেয়া কেতিয়াও নাভাবিব। এতিয়া যি ভক্তি কৰি আছে, এতিয়া যি ভগৱন্তৰ গুণৱত্তাক শুনি আছে, নিজৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ কাম কৰাৰ উপৰিও গৃহস্থ ধৰ্মত থাকিও ভগৱন্তৰ উপাসনাও কৰি গৃহস্থ ধৰ্মও পালন কৰি আছে, এয়া এক প্ৰকাৰৰ পুণ্য। আগৰ পূৰ্বাৰ্ধত আপুনি কৰি অহা পুণ্যৰ প্ৰভাৱে আজি এই ফল আপুনি পালে যেতিয়া, এতিয়া যদি পুণ্য কৰে পুনৰাই এই ফলৰ পৰা আমি কেতিয়াও বঞ্চিত নহওঁ। মানে আমি এতিয়া কৰা পুণ্যৰ ফল আগলৈ পায়ে থাকিম। কিন্তু আজি পুণ্য কৰিলে আৰু কালি ফলৰ যদি চিন্তা কৰে, তেতিয়াহ'লে নাপাওঁ। ভগৱন্তই ক'লে যে কৰ্ম কৰা প্ৰথমতে, কিন্তু কেনেকুৱা কৰ্ম কৰিব? 4 পুৰুষাৰ্থ, ধৰ্ম অৰ্থ কাম মোক্ষ। ধৰ্মপূৰ্বক আচৰণেৰে কৰ্ম কৰি যাব লাগে। আমাৰ ছ'চাইটিত বহুত শিক্ষক আছে, বহুত শিক্ষক। বেছিভাগ মানুহে শিক্ষকৰ ওপৰত, বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে, আমাৰ ছ'চাইটিত নহ'বও পাৰে, নাথাকিবও পাৰে। কাৰণ ইয়াত সকলোৱে যেতিয়া শিক্ষক, তাক কোনে ভাবি থাকিব? মানুহে কয় যে শিক্ষকে অমুক কৰে, তমুক কৰে, বা শিক্ষাদান নকৰে। এনে নিজৰ যি চাকৰি আছে, সেই চাকৰিৰ মৰ্মে চলি থাকে। এনেকৈ বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা কলংক লগায়। কিন্তু সমাজৰ অভিন্ন অংগ যদি কিবা আছে, সেয়া হৈছে শিক্ষাগুৰু। শিক্ষাগুৰুৰ বাহিৰে আমি কেতিয়াও একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ শিক্ষাই যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে চকু থাকিও আমি অন্ধ। যি গুৰুৱে আমাক শিক্ষা প্ৰদান কৰে, বা মই যদি সেই গুৰুৰ লগত অধ্যয়ন কৰাও নাই, কিন্তু সেই গুৰুজনাবিলাক, যিমান গুৰুজনা আছে আমাৰ ছ'চাইটিত, তেখেতসকলৰ পৰা কিমান যে ছাত্ৰ উপনীত হ'ল, কিমান সেই ছাত্ৰসকল সুন্দৰ সুন্দৰ স্থানলৈ সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈ গ'ল। এয়া হৈছে শিক্ষকৰ ধৰ্ম। তো শিক্ষকে এক সমাজ গঢ়িবলৈ অহৰহ নিজৰ ভূমিকা প্ৰদান কৰে। তেনেকৈ আমি আধ্যাত্মিক জগতত যেতিয়া আহোঁ, তেতিয়া আমি প্ৰত্যেকজনে নিজৰ গুৰুক সুঁৱৰি নিজৰ যি দৈনন্দিন জীৱন, সেই দৈনন্দিন জীৱন গুৰুৱে দিয়া মাৰ্গদৰ্শন অনুসাৰে চলিব লাগে। ধৰ্ম অৰ্থ কাম মোক্ষ ক'বলৈ ইমান সহজ,
কিন্তু যেতিয়া আমি ইয়াক মনন কৰোঁ, ধৰ্ম অৰ্থ কাম মোক্ষ, যি ধৰ্মপূৰ্বক আচৰণেৰে যিজন ব্যক্তিয়ে ধৰ্মপূৰ্বক আচৰণেৰে কৰ্ম কৰি যি ধন ঘটে উপাৰ্জন কৰে, সেয়া নিজৰ ঘৰ পৰিবাৰ লগতে সমাজৰ উপকাৰৰ কাৰণেও আৰু দিন দুখীৰ সেৱাৰ কাৰণেও নিজৰ অৰ্জন কৰা ধনৰ পৰা বিনিয়োগ কৰি নিজৰ জীৱন যাপন তেখেতে পালন কৰি যায়, সেয়াই ভগৱানৰ ভক্ত। এনে নহয় যে পুৱাই উঠি শংখধ্বনি কৰিলে, আৰতি কৰিলে, নিত্য পূজা পাঠ কৰিলে সেইজন মাত্ৰ ভগৱন্তৰ ভক্ত হ'ব নোৱাৰে। যিজনৰ অন্তকৰণত যদি পৰোপকাৰৰ ভাৱনা আছে, সিজন ব্যক্তিয়ে যদি পূজাও নকৰে তথাপি ভগৱন্ত সেই ভক্তৰ পৰা সদায় সুখী থাকে। এয়া আমি বুজিব লাগিব আৰু সদায় নিজৰ জীৱনক ভগৱানৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰি দিব লাগে। প্ৰভু আপুনিয়ে দিয়া এই জীৱন, তো কি মৰ্মে আপুনি চলাব, কোন পথেৰে মোক লৈ যাব আপুনি জানে। এই মনোভাৱনাৰে আমি দৈনন্দিন জীৱন আমাৰ ব্যৱহৃত যি দৈনন্দিন জীৱন আছে, যেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰিক ৰূপে পাৰ কৰি যাওঁ, সেই সময়ত নিষ্ঠাৰে ভক্তি অন্তকৰণত স্থাপিত কৰি সংস্কাৰিত নিজক কৰি তাৰ পিছত আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন যদি আমি চলাই লৈ যাওঁ, আমি কোনো ধৰণৰ দুখ কষ্ট জীৱনত নাপাওঁ। এয়া চিৰসত্য। কিমান আগতে আজি 2009मा मैले यो 10वीको एक्जाम दिएको थियो। त्यतिखेर मैले पढ्दा एउटा अंग्रेजीको च्याप्टरमा सोक्रेटिस भन्ने एउटा पद्य भेटाएको थियो। त्यसमा एउटा लाइन लेखेको थियो, त्यो अहिले पनि मलाई मुखस्थ छ। त्यहाँ एउटा लाइन लेखेको थियो, त्यो लाइन अहिले पनि मलाई राम्रो गरी थाहा छ। किन त्यो लाइन जसले पनि भनौँ मानौ यस्तो सामान्य लाइन थिएन। त्यो कस्तो थियो त भन्दा नथिङ क्यान ह्यापन फर ए गुड म्यान आइदर इन लाइफ अर आफ्टर डेथ। यानी एउटा अगर राम्रो व्यक्ति हो भने, राम्रो आचरणले चलेको छ भने, परोपकारको भावनाले जिएको छ भने, न त उसलाई जिउँदो हुन्जेलसम्म कहिल्यै केही कष्ट हुन्छ, दुःख पर्छ, न उसले मरे पछाडि नरकको यातनालाई भोग्नुपर्छ। कति राम्रो शब्द रहेछ, अहिलेसम्म चुबिरहेको छ मलाई। त्यो कहिल्यै बिर्सिन्न म। यहाँ भाइहरू सधैँ भन्नुहुन्छ जुनै कथा पनि त तपाईँको निस्किन्छ भनेर। निस्किन्छ, बिर्से पो त, गफ गर्दा गर्दै निस्किन्छ कोही बेलामा। किन कोही कोही शब्दहरू कुनै पोएटहरूले बताएका कुराहरू, कुनै लेखकहरूले दिएका जुन लाइनहरू छन्, ती कहिल्यै पनि बिर्सिँदैन भनेदेखि त्यो पनि त कसैले त्यो पाठ्यक्रमलाई मैले राम्रो लागेर एकदमै पढेको पढे पुरै त्यो सबै मुखस्थ गरिसकेर थिएँ। आफू बुझ्दैन थिएँ होला, सायद त्यत्रो बुझ्ने क्षमता सायद थिएन होला है। अङ्ग्रेजीमा म अलिक त्यस्तै छु, मलाई आउँदैन। संस्कृत भन्नु, अर्थगर्थक भन्नु आउँछ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अलिक त्यति खासै आउँदैन। त्यही पनि ती सब कुराहरू कति प्राय याद रहन्छन्। अब हामी पढ्न गइरहेथ्यौँ जति बेला, हामीलाई पढाउँदाखेरि सानो अवस्थादेखि नै जति बेला प्रार्थना हुन्थ्यो स्कुलमा, त्यतिखेरदेखि नै हामीलाई कति संस्कारहरू। अहिले त एलपी स्कुलभित्र पनि भित्र अनेक प्रकारका लाइनहरू लेखेर राखेको हुन्छ। ती लाइनमा कसले ध्यान दिन्छ होला तपाईँ सोच्नुहोस् त। त्यहाँ लेखेर राखेको छ, किन लेखेको हो त कहिले कसैले अब्जर्भ गरेछ, कहिले सोचिन्छ त्यस विषयमा। त्यहाँभित्र लेखेको हुन्छ अहिंसा परमो धर्म, हत्यार खदाय जय, यस्तो लाइनिङ लेखेर राखेको हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ के हो त, त्यसले चाहिँ के परिवर्तन ल्याउँछ र त्यहाँ लेखेको भन्नुहोस् त। त्यो सोच कतिखेर आउँछ थाहा छ? जब तपाईँ बिहान जानुहुन्छ स्कुल, सानो अवस्था छ नि त, एलपी स्कुलमा पढ्ने नानी कति ठुलो होला र, बिहान जान्छ त्यही लाइन देख्छ, हत्यार खदाय जय, अहिंसा परमो धर्म। त्यो सधैँ बिहानै देख्छ, बेलुकै देख्छ, बिहानै देख्छ, बेलुकै देख्छ, निरन्तर उसको आँखा अगर त्यसैमा लाग्यो भने अभ्यास पनि त्यस्तै हुन्छ।
किनभने जस्तो संस्कार बाल्यकालदेखि प्राप्त भएको छ त्यस्तै वृद्ध हुन्जेलसम्म त्यो अडी नै रहन्छ। सानोमा सिकेका कुराहरू त्यति मजाले यादगार हुन्छन्, सधैँभरि स्मरणीय हुन्छन्। आत्मदेव एकजना निष्ठावान ब्राह्मण, भन्नुहोस् न त राधे राधे, अलि साह्रो भनिदिनुहोस्। तर पत्नी कस्ती भेट्नुभयो? धुन्धुली, यानी धुनधुन करोति यह सह धुन्धुली। ओल्लो घर जाने पल्लो घर जाने, 24 घण्टा अनलाइन, मोबाइलमा होइन मुखमा कच्याउ कच्याउ खाएको छ है। त्यस्तो खालको अभ्यास थियो। त्यो फल भेटेर त उनले के सोचिन् लु चाहिएन मलाई सन्तान। त्यति बेलै उसकी बहिनी आइपुगिन् टुप्लुक्कै। बहिनीले के भनिन्, मेरा घरमा वर्षभरिका छन् 9वटा भइसक्यो, जनवरी फेब्रुअरी मार्च एप्रिल मे जुन महिनै पछिका वर्षका नानीहरू छन्, तर मेरा घरमा भने पर्याप्त धन छैन। नानी त छन्, उनीहरूको पोहपाल गर्नको निमित्त धनको कमी छ। तसर्थ एक काम गर, त यो फल नखा, ठिकै छ। तिमीहरूको घरमा जुन एउटा नब्याएकी ती गौ बाँधेकी छन् उसैलाई लगेर यो फल अर्पण गर। म पुनः 2 महिनाकी गर्भिणी छु, त म सँगसँगै हिँड। जहिले मेरो गर्भबाट सन्तान जन्मिन्छ त्यति बेला मैले जन्माएको सन्तान भन्नु, घर लिएर आउनु। आखिरी घरमा अरू त कोही छैनन्, आत्मदेव दिनभरि आफ्नो कार्यमा व्यस्त र भिनाजुलाई त्यस्तो प्रकारले ढाँट्नु पर्छ। यो सबै एकदमसँगले राम्रो जाल बिछाए। त्यसरी नै लिएर गए, त्यो बहिनी चाहिँले लिएर गई धुन्धुलीलाई। धुन्धुलीका घरमा धनको अभाव थिएन, धुन्धुलीले धन दिई प्रदान गरी बहिनीलाई। सन्तान जन्मियो समयमा, केही दिनपछि धुन्धुलीले सन्तानलाई लिएर आई घरमा। आत्मदेवलाई के भने, मेरो सन्तान जन्मियो। आत्मदेव फर्केर त्यो दिन जुन फल ग्रहण गरेको दिनदेखिबाट धुन्धुलीलाई भेट्नु भएन, किन त्यही दिन गई। मेरो यहाँ सयार सुसार कसले गर्छ, मेरी बहिनी कहाँ जान्छु उहीँ बस्छु भनेर। उहीँ बसी सन्तान जन्मियो बहिनीको, मेरो भनेर लिएर आई। आत्मदेव यति प्रसन्न हुनुभयो सन्तान जन्मियो भनेर। नामकरण संस्कार गर्ने बेला भयो, 11 दिनको दिन। ब्राह्मण बोलाएर ल्याइयो। धुन्धुली भन्छे मेरो सन्तान हो यो, तसर्थ नाम राख्ने अधिकार मेरो छ, ब्राह्मणको होइन। कति अप्ठ्यारी रहेछ है। अनि ऊ के भन्छे, मेरो नाम अगर धुन्धुली हो भने मेरा छोराको नाम म धुन्धुकारी राख्छु। उसले आफ्नो सन्तानको नाम धुन्धुकारी राखी। यथा नाम तथा गुण, नाम जस्तो हुन्छ त्यस्तै फर्किँदै आउँछ बिस्तारै बिस्तारै। अब समय अनुसार त्यो फल जुन गौलाई दिएको थियो त्यहाँबाट पनि एउटा दिव्य सन्तानको जन्म भयो, जसका कान भने गाईका जस्ता, स्वरूप पूर्ण रूपले मानव। नामकरण संस्कार भयो, गोकर्ण भनी नाम राखियो। समयको साथ उनीहरू बढे, हुर्किए, ठुला भए। 8 वर्ष भए, उपनयन संस्कार यानी जनै लगाइदिने बेला भयो। धुन्धुलीले यो मेरा छोरालाई यानी धुन्धुकारीको अहिले उपनयन गर्दै गर्दिन, जनै सयार्दैन, हेन तेन हाबीजाबी अनेक थोक आफ्ना श्रीमानलाई सुनाएर उपनयन संस्कार धरि गर्न दिइन। तर यता गोकर्णजीको उपनयन संस्कार भयो। उहाँ गुरुकुल जानुभयो अध्ययन गर्नको निमित्त। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखल। समय अन्तरालमा कस्तो भयो त भन्दा गुरुकुल जानुभएका गोकर्ण पण्डित बन्नुभयो, तर यो धुन्धुकारी महाको दुष्ट भयो। यसले के गर्दछ, घरमा जुन थाल बोटुका आङखोराहरू थिए ती सबै लिएर जान थालो, बेच्न थालो। अनि के गर्छ त्यो धनले त भन्दा जुवा खेल्छ। आफ्ना साथीहरूसँग बसेर जुवा खेल्छ। त्यसरी नै घरको जति पनि धन थियो त्यसलाई नष्ट गर्न थालो। समय अनुसार एक दिन आत्मदेवलाई जब पत्तो पाउनुभयो छोराले यस्तो प्रकारको कर्म गर्दैछ, धिक्कार लाग्यो। हिजो सन्तान छैनन् भनेर म रुँदै थिएँ, आज सन्तान प्राप्त भए पश्चात यो दुःख कसलाई सुनाउनु? त्यो दुःख कोही थिएन त्यहाँ सुन्ने, किनभने उहाँ आफै विद्वान हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। अब
एकजना विद्वान भएर मेरो घरमा यस्तो भयो उस्तो भयो भन्दै अर्कालाई सुनाउँदै दुखेसो सुनाउँदै हिँड्नु पनि त राम्रो भएन। उहाँ मनले हरेस खाएर कहाँ जानुभयो? गुरुकुलमा, जहाँ गोकर्ण पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गएर गोकर्णलाई यानि छोरालाई बिलना गाएर सुनाउन लाग्नुभयो, यस्तो भयो उस्तो भयो, घरमा अशान्ति छ। तब गोकर्णजीले एउटा दिव्य उपदेश प्रदान गर्नुभयो आफ्ना पितालाई। एउटा बालकले एक वृद्धलाई, एउटा छोराले बुबालाई, पितालाई उपदेश प्रदान गरे। कस्तो उपदेश? देहेस्तिमां सरुधिरे भीमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। भन्नुहोस् न त राधे राधे, अलि साह्रो भनिदिनुहोस्। कस्तो? देहे अस्ति मांस रुधिरे। यो शरीरमा के छ? हेर्दा झलक्क टिपटप राम्रो देखिन्छ, तर अनेक प्रकारको हाड, रक्त, मज्जा, मांस, पीप इत्यादिले तयार भएको शरीर छ है। शरीरलाई बाहिरबाट हेरेको छ, स्नान गरेको छ, शुद्धि गरेको छ, वस्त्र आभूषण धारण गरेको छ, तर शरीरको निर्माण प्रक्रियालाई विचार गरेर हेर्ने हो भने कस्तो छ त्यो शरीर? र हे पिताजी, तपाईँ त्यही शरीरको लोभ परेर, यानी त्यही शरीरका मायाले छोरो, श्रीमती, अनेक थोक, यी सबै थोक आफूले सम्झेर यिनीहरूको ममतामा डुबेर तपाईँ त्यसै फसिराख्नु भएको छ। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। यो ममता, यो माया तपाईले त्याग्न सक्नु भएन भने तपाईँ त्यही बेरिनुहुन्छ, तपाईँ मुक्त हुनुहुन्न। त्यसै कारणले पश्यानिदं निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं। यो संसार जो हामी जुन देखिँदैछ, यी चिजहरू वास्तवमा कुनै पनि चिज सत्य छैन। मैले अस्ति पनि भने, जति सुकै तपाईँ प्रेम नगर्नु किन परिवारसँग, जुन दिन तपाईको देहावसान हुन्छ त्यो दिन तपाईलाई समस्त परिवार भएर, यो नियम हो, यो चैन हो, यस्तै छ पहिलेदेखि नै, र यही नै हो वास्तवमा हाम्रो गन्तव्य स्थान। हामी एक्लै नै जानुपर्छ, कोही पनि साथमा जाँदैन। जतिसुकै पुण्य कमाउनु तपाईले, पाप गर्नु तपाईले, भोग्नुपर्छ तपाईले। त्यसै कारणले किन नराम्रो गरेर दुःख पाउनु? सुखै पाऊँ, राम्रै उनीलाई पाऊँ। अनेक प्रकारको कीट पतंग, गुल्मलता, वृक्ष इत्यादि गरी 83,99,999 वटा योनि पार गरेर लड्दै र पढ्दै हामी पुनः मानवको शरीरलाई धारण गर्न आउँछौँ। यो मानवको शरीर पाएर पनि अझै पनि यो जीवश्रेष्ठ मानव भनेर जान्दछ। किनभने अरू जीवलाई जीवश्रेष्ठ भनेन, यो मानवलाई चाहिँ जीवश्रेष्ठ भनौँ। किनभने यो गलत हो, यो सही हो, यो केवल मानवले मात्र थिराङ गर्छ, अरूले गर्दैनन्। पशुले धर्म के हो अधर्म के हो चिन्दैन। त्यही भएर त एक पशुले अर्को पशुलाई जस्तो प्रकारले एउटै घरमा विचार गर्नुहोस्। अघिल्ला पाला जुन पशु चौपाई आदिको जाय जन्म भयो, अर्को पाला जुन जाय जन्म भयो, तिनैमा फेरि युद्ध गरेर लडाइँ गरेर मर्नतिर लाग्छन्। किन? उनीहरूलाई त्यो धर्म, त्यो रिलेसनसिप केही पनि थाहा छैन। तर यो मानव हो नि त है, कसलाई माया गर्ने, कसलाई छोड्ने, कसको प्रति कस्तो दया भाव राख्नु पर्दछ, परोपकारको भाव जगाएर चल्नु पर्दछ, शिष्टाचार नियमावलीलाई हामीले लिएर चल्नु पर्दछ। कुनै पनि चिजमा धेरै मोह भएको राम्रो होइन पिताजी। त्यही कारणले म तपाईलाई भन्दैछु, तपाईँ एकान्तमा जाने, गएर निरन्तर निरन्तर भगवानको भजन गर्ने अनि आफ्नो देहलाई त्याग गर्ने। यस्तो प्रकारले छोराले अर्ती बुद्धि दिए पश्चात गोकर्णजी त्यहाँबाट निस्केर जानुभयो, वनमा गएर निरन्तर भगवानको भजन गर्नुभयो। समय अनुसार उहाँ
गोलोकधाम जानुभयो। पितुर्युर्परते तेन जननी ताडिता वृषम। पिता जानुभयो निस्केर। अब यसले के गरौँ? जननी ताडिता वृषम। यो धुन्धुकारी अब घरमा झन् एकदमै उन्मत्त भयो। आमाका छेउमा गयो, यानी धुन्धुली वास्तवमा हेर्न जाने भने धुन्धुलीको सन्तान त होइन, बहिनीको सन्तान त्यस्तो प्रकारले नाटक गरेर ल्याएको छ। त्यसको परिणाम त भोग्नु नै थियो। त्यहाँ एक निष्ठावान ब्राह्मणलाई छल पनि गरेको छ। अनि आमा हुने जुन अधिकार हो त्यो अधिकारलाई आफैले कुचलेको छ। यो त ईश्वरको दृष्टिमा महापाप हो। त्यो महापापको प्रायश्चित कसरी गर्नु पर्दो रहेछ हेर्नुहोस्। पाप ठिकै छ, प्रायश्चित हुन्छ, महापाप प्रायश्चित हुँदैन, फलेरै छोड्छ। हेर्नुहोस् अब, पितुर्युर्परते तेन जननी ताडिता वृषम। पिता चाहिँ निस्केर गए पश्चात के भन्दछ? क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लतया नचे। अब घरमा त्यो धुन्धुकारी र धुन्धुली मात्र छन्। आमालाई भन्दछ, के भन्छ? शीघ्र अति शीघ्र कहाँ कहाँ धन राखेका छन् छिटो छिटो निकाल, नभए पाउले प्रहार गर्छु तँलाई म। यसरी जब चिच्याउन लाग्यो, एक दिन के भयो? रात्रिको अवधिमा पैसा मागेर धन मागेर धेरै परेशान गर्यो। अब कुट्न कुदायो धुन्धुकारीले धुन्धुलीलाई। तब के भयो? अँधेरामा भाग्न खोज्दा कूपे पातकृतो रात्रौ तेन सा निधनम गत। कुवामा परेर धुन्धुलीको मृत्यु भयो। अब कोही पनि छैनन् घरमा। को छ? एक्लै हात्ती चाहिँ त्यो धुन्धुकारी। यस्तो अत्याचार बढो। उसले अनेक थरीका गणिकाहरूलाई लिएर आयो घरमा। जो दुराचारी स्त्रीहरू छन् उनीहरूलाई लिएर आएर पाल्न थालो। जब घरको सम्पूर्ण सम्पत्ति सकियो, राजाको दरबारमा गएर चोरी गर्न थालो। त्यहाँबाट चोरेको धनले ल्याएर ती व्यभिचारिणी स्त्रीहरूलाई धन दिएर घरमा उनीहरूसँग रमण गरेर बस्दथ्यो। त्यतिसम्म गिरेको धुन्धुकारी भयो। समय अनुसार ती गणिकाहरूले विचार गरे, ती दुष्ट चरित्र भएका स्त्रीहरूले विचार गरे, अब यसै गर्ने हो भने हो यसले एक दिन कुन दिन पक्राउ खान्छ, उसले पक्राउ खाँदा हामीलाई पनि थुनिनु पर्ने अवस्थिति आउँछ। यसलाई अब टुङ्गो लाउनु पर्दछ। राति नै ती गणिकाहरूले पाउ बाँधिदिए शयन गरेको ठाउँमा, हात बाँधिदिए शयन गरेको ठाउँमा, अनि आगाको अगुल्टो ल्याएर मुखमा ठोसी ठोसी धुन्धुकारीलाई मारिदिए। धुन्धुकारीको अन्त भयो। त्यो दुराचारी धुन्धुकारी अन्त भए पश्चात प्रेत योनिलाई प्राप्त भयो। अनि जब प्रेत योनिमा लाई प्राप्त भयो, ऊ यता आमाको देहावसान हुँदा पनि, यानी धुन्धुलीको देहावसान हुँदा पनि गुरुकुलमा रहेर गोकर्णजीले अन्त्येष्टि कर्मक्रिया गर्नुभयो। आत्मदेवको पनि अन्त्येष्टि क्रिया गर्नुभयो। धुन्धुकारी खबर पाइसक्दा उसको पनि अन्त्येष्टि क्रिया आदि गरी गया श्राद्धहरू सम्पूर्ण गरिदिनु भयो। भन्नुहोस् न त राधे राधे, अलि साह्रै भनिदिनुहोस्। सबै थोकै गरिदिनु भयो। तर जहिलेसम्म एउटा कुरा सधैँभरि याद राख्नु पर्दछ, भगवानको श्रीचरणमा हामी जानै पर्दछ, अन्यथा हामीलाई कुनै प्रकारको शुभ फल प्राप्त हुँदैन। अब यस धुन्धुकारीलाई मुक्त कसले गर्दछ त भन्दा समय अनुसार गोकर्णजी आफ्नो घर फर्किनु भयो। रात्रि शयन गर्नुभएको छ, घरि घोडा कुदेको आवाज आउँछ, घरि कुकुर रोएको स्याल कराएको आवाज आउँछ। शब्द जतापट्टि आउँछ त्यतैपट्टि जल लिनुभयो। अनि गोकर्णजीले जब त्यो जलले त्यही स्थानपट्टि जब छिटक्नुभयो, छिटक्दाखेरि त्यहाँबाट विकराल एउटा कालो स्वरूपको प्रेतको उत्पन्न भयो। अनि तब गोकर्णजीले सोध्नुभयो, को हौ तिमी? यस्तो प्रेत योनिलाई के कारणले प्राप्त भयो? अब त्यो धुन्धुकारी के भन्दछ? अहम भ्राता तदीयोस्मि।